Hello to all you good people. You're watching Weekly Wrap, where we summarize the top trending stories of this week. I'm Vinita Chatterjee. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। NPCI has allowed WhatsApp to add 100 million users to its UPI-based payment service WhatsApp Pay. This announcement has brought many needed clarity and relief for the Indian crypto users because of the chain of events that happened over the last week. So what happened was, Coinbase, which is world's second biggest crypto exchange, suspended the popular United Payments Interface facility 3 days after announcing its launch in India. The National Payments Corporation of India, or NPCI, hours after Coinbase's India launch last week, said that it was not aware of any crypto exchange using UPI payment instruments. Meanwhile, MobiKwik wallet, which had partnered with major cryptocurrency exchanges, has also stopped supporting crypto trading. After that, multiple Indian crypto exchanges, including WazirX, CoinSwitch Kuber, BitBNS and CoinDCX, disabled Unified Payment Interface as well as all the rupee deposits on their applications. So last week, the Indian crypto investors had no means to deposit funds in any of the crypto exchanges. The lack of regulatory clarity led to 40 to 70% drop in trading volumes across all major crypto exchanges. But now, NPCI has approved WhatsApp to extend UPI to 100 million users. So, in a nutshell, now crypto exchanges have to link up first with WhatsApp Pay for UPI payments like they previously had with MobiKwik, and then they can start accepting payments from their users via WhatsApp Pay. विनीता, भारत के क्रिप्टो यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ी ये न्यूज़ है। एक्चुअली आई होप एनपीसीआई की इस कदम से जिन्होंने यूपीआई सिस्टम बंद किया है वो भविष्य में इसे शुरू करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। इंडियन एसेट मैनेजर ने ब्लॉकचेन, मेटावर्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT में इन्वेस्टमेंट के लिए मेटावर्स फंड प्रपोज किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी इस फंड को अप्रूव नहीं करेगा। सेबी एक्ट के तहत अगर किसी भी फंड के अंडरलाइन एसेट्स अगर एज अ सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं तो सेबी ऐसे फंड को क्लियर नहीं करेगा। हाल ही में नेवी म्यूचुअल फंड ने मेटावर्स ETF फंड ऑफ फंड FOF प्रपोज किया था, जबकि आदित्य बिरला ने ब्लॉकचेन और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स VDAs ETFs फंड ऑफ फंड प्रपोज किया था। बता दें कि अभी तक सेबी इस मामले पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुई है। It seems like SEBI is still not ready to accept this metaverse fund as proposed by the Indian asset managers for investment in metaverse, blockchain and IoT, isn't it, Sandeep? Correct. Now let's move on to our next story. Elon Musk, the controversial tech billionaire, has made an offer to buy all of social media group Twitter for $41.39 billion, according to SEC filing made on Thursday morning. He has, however, offered to buy Twitter for $54.20 per share cash. Musk's offer price of $54.20 per share represents a 38% premium to the closing price of Twitter stock on April 1st, the last trading day before the Tesla CEO's over 9% investment in the company was publicly announced on April 4th. The following day, Twitter CEO Parag Agrawal announced that Musk would be joining the company's board. Before, Musk declined to join the board. Had he joined, he would have been limited to owning a 14.9% stake in the company. The news of hostile takeover by Musk led to over 5% immediate spike in Dogecoin. Billionaire investor Mark Cuban said that every major tech company is calling their lawyers about buying Twitter after Elon Musk's hostile takeover. However, some analysts have doubts over Elon Musk's hostile takeover of Twitter because some of the stakeholders refuse to part away with their stakes, citing low offers. So little wonder why Twitter shares ended down on Thursday. Analysts believe that Musk lacks the funding to take over Twitter. He already has pledged a portion of Tesla holdings, and balance isn't sufficient for the takeover. He hasn't tied up other lines of credit and says he has enough assets to back.
But when Musk was asked directly about it in public, Musk did not exactly try to reassure anyone. He didn't say he had financing, and he said, "I'm not sure that I will actually be able to acquire it." अब आने वाला समय बताएगा कि क्या मस्क ट्विटर को बाय करने में सक्सेस होंगे या नहीं। एनीवेज, अब चलते हैं अगली खबर की ओर। क्रिप्टो में वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ रहा है। द ब्लॉकचेन रिसर्च के रिव्यू के मुताबिक 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ब्लॉकचेन प्राइवेट फंडिंग एज वेल एज मर्जर्स और एक्विजिशंस को मिलाकर वेंचर कैपिटल फर्म ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग $12.5 बिलियन रेज किए हैं। 2022 के पहले 3 महीनों में इतना सारा कैपिटल रिकॉर्ड ब्रेकिंग 624 फाइनेंशियल डील्स के थ्रू रेज हुआ है। अगर इस वीक की बात करें तो व्हाइट स्टार कैपिटल ने मेटावर्स इन्वेस्टमेंट के लिए $120 मिलियन रेज किया है। टोन कॉइन ने भी $250 मिलियन का इकोसिस्टम फंड लॉन्च किया है, जिसका सोल एम एंटरप्रेन्योर्स और टोन ब्लॉकचेन के डेवलपर्स को सपोर्ट करना है। अपने इकोसिस्टम को सपोर्ट करने वाला ये ऐसा फंड है। वही पेंट्रा कैपिटल ने अपना पेंट्रा ब्लॉकचेन फंड $1.3 बिलियन के फाइनेंशियल कमिटमेंट मिलने पर क्लोज किया है। और स्टेबल कॉइन के इश्यूअर सर्कल इंटरनेट फाइनेंशियल ने अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप में $400 मिलियन का फंडिंग राउंड प्रपोज किया है, जिसका उद्देश्य सर्कल के डेवलपमेंट के लिए होगा। इसके अलावा भी कई फिनटेक फर्म्स ने मिलियन ऑफ डॉलर्स का कैपिटल रेज किया है। जैसे आप देख सकते हैं, क्रिप्टो में फिनटेक कंपनीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। So true. And yes, Sandeep, if we are talking about tech firms, we need to include the Mark Zuckerberg-owned social media giant Meta Platforms Inc. in our next story. Despite the SEC ruling last week that Meta must hold shareholders' vote before moving ahead with the metaverse plans, Horizon World's social media giant, which is Meta's social virtual reality app, is testing a feature that will let creators sell virtual items and effects within their worlds. That program will not be subject to fees, but the virtual items marketplace could see Meta take anywhere from 25% to 70%. Looks like Meta is eager to cash on becoming the first company to provide such a service. It seems Meta is planning to become the Amazon of Metaverse. बिल्कुल विनीता, अपने मेटावर्स प्रोजेक्ट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स सीन करने के बाद भी मेटा पूरे जोश से सोशल मीडिया कंपनी से मेटावर्स कंपनी के ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस के न्यू मीडिया आर्म ने बोर्ड एप यॉट क्लब के बारे में ट्रायलॉजी यानी 3 फिल्म्स प्रोड्यूस करने का अनाउंसमेंट किया है। ये सीरीज ऑफ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स होगी, जिसमें पहले इंस्टॉलमेंट का नाम द डेगन ट्रायलॉजी है। कॉइनबेस ने बोर्ड ऐप के ओनर्स को ट्रायलॉजी की कास्टिंग के लिए अपने कैरेक्टर्स को सबमिट करने के लिए इनवाइट किया है। इस सीरीज के कॉइनबेस के लॉन्ग अवेटेड NFT मार्केटप्लेस के साथ भी टाइप होगा, जो बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है। Wow, it seems really interesting to see the BAYC NFT characters coming to life on the silver screen, isn't it, Sandeep? Correct. Now let's move on to our next story. Luna Foundation Guard, LFG, a Singapore-based non-profit organization focused on boosting the Terra blockchain, has purchased another $100 million worth of Bitcoin earlier this Sunday. Terra founder Do Kwon tweeted that Terra intended to buy up to $10 billion worth of Bitcoin in order to become the single biggest holder of the top cryptocurrency. LFG also bought $100 million worth of Avalanche or AVAX tokens earlier this week, moving beyond Bitcoin. विनीता, हर दूसरे दिन टेरा ओनर डो कॉन बिटकॉइन बाय कर रहा है। Wow. अब देखना यह होगा कि बचे हुए 2 मिलियन सप्लाई में से डो कॉन और बिटकॉइन बुल माइकल सेलर में से कौन ज्यादा बिटकॉइन बाय करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिछले महीने मार्च में प्ले टू अर्न गेमिंग प्लेटफॉर्म एक्सी इन्फिनिटी के रॉनिन ब्रीच की वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाकर हैकर्स ने ओवर $625 मिलियन का अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट चुराया था। अब इन हैकर्स ने स्टोलन फंड्स में से 21,000 ETH यानी अराउंड $65 मिलियन का अमाउंट टोर्नेडो कैश के थ्रू मूव किया है। टोर्नेडो कैश एक प्राइवेसी प्रोटोकॉल है जो सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस के बीच की ऑन चेन लिंक को ब्रेक करके ट्रांजैक्शन की प्राइवेसी को एनहांस करता है। लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने रॉनिंग एक्सप्लॉइट को नॉर्थ कोरिया के हैकिंग ग्रुप लेजरस के साथ लिंक किया है। साथ ही ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म्स चैनलिसिस और एलिप्टिक ने भी कंफर्म किया है कि रॉनिन हैक के पीछे नॉर्थ कोरिया का भी हाथ है। यूएस ट्रेजरी ने फिलहाल यूएस वॉलेट्स को सैंक्शन लिस्ट में ऐड कर दिया है, जिसमें हैकर्स ने चुराया हुआ अमाउंट स्टोर किया गया है।
हालांकि हैक अमाउंट में से कुछ पोर्शन हैकर्स ने ऑलरेडी मूव कर दिए हैं। North Korea doesn't have a sustainable economy of its own, so every year hundreds of millions of dollars it is stealing through hacking, which is so pathetic, isn't it, Sandeep? Absolutely correct. So now moving on to the market weekly wrap. After crossing the $45,000 level, Bitcoin dipped below $40,000 but eventually managed to return above $40,000 while Ether traded around $3,000. Meanwhile, most altcoins underperformed Bitcoin, suggesting a lower appetite for risk among crypto traders. Apart from macros and geopolitical uncertainties, one of the reasons why stocks and cryptos traded in choppy price range is the 8.5% acceleration in the US inflation, a new 4-decade high. Some economists and analysts, however, believe that inflation may have peaked and then spiraled slow very soon. Waves and Luna have declined by more than 20% over the past week, compared to 7% loss in BTC over the same period. Now moving on to the last weekly headline. Over to you, Sandeep. इस वीक क्रिप्टो पेमेंट प्लेटफॉर्म मूनपे ने $3.4 बिलियन के वैल्यूएशन पर 87 मिलियन की फंडिंग रेज की है, जिसमें 60 से भी ज्यादा हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज ने पार्टिसिपेट किया था। मूनपे इस फंडिंग का यूज वेब3 पूछ के लिए करेगी। सेलिब्रिटीज फंडर्स में मैरिया शारापोवा, जस्टिन बीबर, ब्रूस विलिस, पेरिस हिल्टन, गैल गैडोट, स्नूप डॉग जैसे कई पॉपुलर पर्सनालिटीज का नाम भी शामिल है। ऐसा लग रहा है कि हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज अब खुलकर क्रिप्टो और वेब3 स्पेस में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे हमारा बॉलीवुड भी पीछे नहीं है। सलमान खान और अमिताभ बच्चन ने अपनी NFT के थ्रू क्रिप्टो स्पेस में एंट्री ले ली है। आज के वीकली रैप में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक मैं संदीप कसालकर and I'm Vinita Chatterjee and you're watching cryptoTV.